Hello student, today we are talking about the ICT most important topic for UGC NET paper 1 December 2024. ठीक है, in quick revision, तो let's start. ICT Marathon UGC NET December 2024. Today we are talking about the IP address, difference between the IP version of 6 and IP version of 4, and difference between the and protocol for internet and device used on internet, web browser, search engine, etc. OSI reference model, application, presentation, session, transport, network and data link and physical. And TCP IP, conceptual layer, application, transport, network interface. ठीक है, OSI मॉडल एप्लीकेशन लेयर का एग्जांपल HTTP, SN, MP, FTP, etc. प्रेजेंटेशन लेयर एग्जांपल WMV, JPEG, PNG, etc. एंड सेशन लेयर, इसके बाद आएगा ट्रांसपोर्ट लेयर का एग्जांपल TCP, UDP एंड नेटवर्क IP. नेटवर्क का जो लेयर का एग्जांपल है IP. ठीक है, IP एड्रेस एंड डेटा लिंक MAC, MAC एंड FCS एंड फिजिकल डेटा इनकोडिंग. ठीक है, यहाँ पर डिटेल्स में देख सकते हैं आप लोग. ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर के अंदर आएगा SMTP, FTP, टेलनेट, DNS, SNMP, NFS, RPC, TFTP. ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर आएगा TCP एंड UDP. और नेटवर्क लेयर के अंदर आएगा ICMP, IGMP, IP, ARP, RARP. ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, सेट ऑफ द रूल governing the format of data sent over the internet or other network. What is TCP or IP? TCP, transmission control protocol, sending the data by packet switching. ठीक है, IP, internet protocol, assigning a unique address to each packet. ठीक है, यहाँ पर chronology आ सकता है. It has 4 layers are there: network access or link, internet, ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशन. ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं. एप्लीकेशन लेयर के अंदर आएगा HTTP, TLS, DNS. ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर आएगा TCP, UDP. नेटवर्क लेयर के अंदर आएगा IP वर्जन 4, 6 एंड लिंक लेयर के आएगा. लिंक लेयर का एग्जांपल है इथरनेट एंड वायरलेस LAN. ठीक है, यहाँ पर डिटेल्स में देख सकते हैं. और भी एप्लीकेशन लेयर HTTP, HTTPS, टेलनेट, FTP, SMTP, POP, GOPHER, DNS. ये सब एप्लीकेशन लेयर के एग्जांपल है. ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर के एग्जांपल TCP, UDP, DCCP, SCTP, RSVP, etc. इंटरनेट लेयर का एग्जांपल IP वर्जन 4, 6, ECN, IGMP, IPSC. ठीक है, SEC. एंड लिंक लेयर के एग्जांपल ARP, PPP, MAC, इथरनेट एंड वाईफाई. एंड मेजर प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP, इंटरनेट प्रोटोकॉल IP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल UDP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल POP, मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर HTTPS, टेलनेट 9 एंड गोफर. इंटरनेट का एग्जांपल देख ले, इंटरनेट एड्रेस का IP एड्रेस का एग्जांपल देख सकते हैं. ठीक है, ये गूगल का IP वर्जन एंड 4 एंड ये गूगल IP वर्जन एंड 6 एड्रेस. ठीक है,
a unique address for device connected to the internet. ठीक है, internet service provider, a special address is provided by the internet service provider when connected to the internet. ठीक है, IP version, IP address and two computer cannot have the same IP address. ठीक है, IP version 4 and 6 का डिफरेंस देख लेते हैं. ठीक है, IP वर्जन 4 1981 पर आया था. ठीक है, एंड IP वर्जन 6 1998 में आया है. ठीक है, एंड IP वर्जन 4 32 बिट्स फॉर्मेट 4 बाइट्स एंड IP वर्जन 6 128 बिट्स फॉर्मेट 16 बाइट्स. ठीक है, एंड IP वर्जन 4 0 टू 255 तक होता है. ठीक है, एंड IP वर्जन 6 ऐसा कोई लिमिट नहीं है. ठीक है, डेवलप इन 1998. ठीक है, IP version 4 is the most used internet protocol developed 1970 17 और 80s पर. ठीक है, each group is separated by a dot and splitting the IP address in 32 bits format 4 bytes. ठीक है, and IP version 6 is split into IP address 128 bit format 16 bytes. ठीक है, each group is separated by a colon. नेक्स्ट यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं IP वर्जन 4 एंड IP वर्जन. ठीक है, नेक्स्ट IP वर्जन 4 एंड IP वर्जन 6 अच्छे से देख सकते हैं एग्जांपल. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर भी एग्जांपल देख सकते हैं. ठीक है, IP types of IP address. Public, one primary address is associated with your whole network. Private, a unique IP address or IP number assigned to every device that connect to internet. IP address static, IP address that cannot be changed. ठीक है, and dynamic, always keep changing. ठीक है, next सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल देख सकते हैं. बेसिक प्रोटोकॉल फॉर मेल exchange over the internet runs on the top of the TCP. Fundamental difference between SMTP and FTP or telnet is that there it is not an interactive protocol. ठीक है, messages are queued and spooled by SMTP agent. ठीक है, user interact with mail application, email application and lots. Application internet with manage the transfer agent, send mail on Unix. Setup and configured by admin. SMTP specifies how the MTA pass the email address across the internet. Also use the NVT commands. ठीक है, SMTP and MIME. SMTP full form simple mail transfer protocol is the main format of the email message, and RFC 822 defines the format of the email text message based on SMTP, like headers, from, to, subject, date, CC, headers, and body, the content of the email. MIME full form extension of the RFC 822 to address some of the limitation of SMTP, with that include cannot transfer the binary file by email, can work only 7 bits SSCII code value 0 through 127, not 8-byte code value 128 to 255 for international language, may rejected large email, and translation problem between ASCII and EBCDIC, problem with the courage, return the line feed and truncating and wrapping line
dealing with the tabs and space and character। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। HTTP Hypertext Transfer Protocol based on this protocol is web browser detect how to deal with the data, ठीक है। and HTTPS Hypertext Transfer Protocol secure, ठीक है। it is secure version of HTTP and SSL full from secure socket layer, ठीक है। secure socket layer which is transfer the data encrypted from between the web browser and server। POP full from post office protocol, ठीक है। this protocol is used to download and updated email। ICMP internet control message protocol, this protocol handle error the time of the communication over the internet and serve to send the error along with the IP datagram to sender। ME full from multi-purpose internet mail extension, the multimedia data that is sent via email, this protocol is used to transfer that data। UNDP full from user datagram protocol, UNDP is used to transmit the small size of data pack, ठीक है। the small size of a data pack is called a datagram, ठीक है। and streaming application, it can be used the most streaming application, ठीक है। UDP user datagram protocol। SNMP full from simple network management protocol, SNMP full from simple network management protocol, ठीक है। this protocol is used to manage the network, ठीक है। IMAP full from internet message access protocol, this protocol serves to store all the mail in the mail server, ठीक है। next simple mail transfer protocol, simple mail transfer protocol is a popular email protocol that is used to send the email। FTP full from file transfer protocol, ठीक है। the protocol is used to transfer the file from one system to another and for which is the particular software called the client is used, ठीक है। unstructured supplementary service data USSD, ठीक है। this is the protocol used to GSM cellular telephone to communication with service provider computer, ठीक है। Gopher GOPH here, Gopher is a through this the file which are the server computer is separated can be access the local computer, ठीक है। इंटरनेट एड्रेस यहाँ पर देख सकते हैं URL डोमेन नेम www एंड सर्वर, ठीक है। URL फुल फ्रॉम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। every web page that is displayed the internet specific address associated with it, ठीक है। this is address known as URL and it was discovered by the Tim Berners-Lee, ठीक है, 1994। antonyms of URL, ठीक है, ये वो देख सकते हैं HTTPS एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। ब्लॉग ये सब डोमेन है, एग्जांपल नंबर 3 डोमेन है, ठीक है। .com ये टॉप लेवल डोमेन है, TLD, ठीक है। एंड सब टॉपिक ये सब फोल्डर है एंड ब्लॉग पोस्ट ये स्लॉग है, ठीक है। देखो डिटेल्स में और भी देख सकते हैं प्रोटोकॉल सेपरेटर डोमेन सेपरेटेड सब डोमेन डोमेन टॉप लेवल डोमेन डायरेक्टर्स एंड रिसोर्स, ठीक है। इस तरह की भी स्ट्रक्चर देख सकते हैं URL की, ठीक है। नेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर टाइप्स एंड सेपरेटर डिटेल्स में देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर डिटेल्स में देख सकते हैं .com
कमर्शियल पर्पस पे होता है, कमर्शियल पर्पस, एंड डॉट इन और इंडिया डॉट co डॉट इन, कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया डॉट नेट, गेटवे और होस्ट .org, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन .edu, एजुकेशन और रिसर्च .gov, गवर्नमेंट .big, बिजनेस .info, इंफॉर्मेशन .mail, मिलिट्री .mil, मिलिट्री .itd, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, ये मैच द फॉलोइंग पर आ सकता है। ठीक है, www इसका जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, it is commonly known as the web is an information system where the document and other web sources are identified by uniform resource locator। ठीक है, URL। टिम बर्नर्स-ली 1989 पर ये डिस्कवर किया था। ठीक है, ये पर देख सकते हैं। ठीक है, मोडेम, व्हाट इज मोडेम? मॉड्यूलर और मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, इसका जो फुल फॉर्म है मॉडेम का। ठीक है, इट्स कनेक्ट द कंप्यूटर और द राउटर टू ब्रॉडबैंड नेटवर्क। ठीक है, modulation, digital signal are converted into analog signal, this action is called the modulation। ठीक है, and demodulation, analog signal converted to digital signal। ठीक है, this action demodulation। ठीक है, modem speed is measured in bps and kbps। ठीक है, ये डिटेल्स में देख सकते हैं आप लोग। ये हब है, हब, गेटवे, राउटर। ठीक है, ब्रिज, स्विच, रिपीटर, ब्रिज एंड स्विच। ठीक है, multiplexer is a low speed transmission line and high speed transmission line। ठीक है, hub is a device that LAN local area network पर काम करता है। ठीक है, twice per the cable wire। ठीक है, एंड रिपीटर्स देख सकते हैं, एंड ब्रिज के बारे में भी देख सकते हैं, एंड गेटवे एंड राउटर। व्हाट इज राउटर? ए राउटर इज ए नेटवर्क डिवाइस दैट फॉरवर्ड द डेटा पैकेट बिटवीन कंप्यूटर एंड नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पर डिटेल्स में देख सकते हैं, मेन टूल्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ठीक है, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, हाइपर लिंक, टेक्स्ट एंड मीडिया, वेब पेज। नंबर 2 वेब पेज, नंबर 3 वेबसाइट, नंबर 4 www, नंबर 5 WB ब्राउजर एंड नंबर 6 ईमेल। ठीक है, इसका क्रोनोलॉजी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हाइपरलिंक, हाइपरटेक्स्ट एंड हाइपरमीडिया, इसका जो डिफरेंसेस वो देख सकते हैं। व्हाट इज हाइपरलिंक? द फंक्शन ऑफ द हाइपरलिंक इज टू कनेक्ट वन वेब पेज विथ अनदर वेब पेज। ठीक है, मोस्ट ऑफ द हाइपरलिंक आर ब्लू इन कलर। ठीक है, एंड ये इन्वेंट किया था हैंडसिंग। ठीक है, नो, hypertext is a text to store the link in text। ठीक है, यूजर click a link in a hyper document on the website and then it usually or easily reach another page। ठीक है, hypermedia is also store the link of the document text as well as other types of media such as video, audio, image and graphics। ठीक है, वेब पेज, ये वेब पेज इज ए डॉक्यूमेंट written in HTML। ठीक है, a browser is required to view the web page। वेब पेज होती है स्टैटिक होता है, डायनामिक होता है। ठीक है, ये वो डिटेल्स में देख सकते हैं। ठीक है,
मार्कअप लैंग्वेज एंड प्रोग्राम लैंग्वेज के एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है। मार्कअप लैंग्वेज HTML, ठीक है, XML, XHTML, ठीक है, हर एग्जांपल। एंड प्रोग्राम लैंग्वेज का एग्जांपल C++, जावा, पाइथन, असेंबली आर द सम एग्जांपल, ठीक है। एंड वेबसाइट एंड WWE का जो डिफरेंस है वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। एंड वेब ब्राउजर, सर्च इंजन, a search engine is a program that search the user's query from the unlimited database of the internet, ठीक है। and web browser is यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, डिटेल्स में। फॉर एग्जांपल वेब ब्राउजर ऑफ ओपेरा, गूगल क्रोम, सफारी, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज एक्सेट्रा, ठीक है। और सर्च इंजन गूगल, बिंग, ठीक है, याहू, यहाँ पर डिटेल्स में देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ब्राउजर सर्च इंजन वर्सेस सर्च इंजन के बारे में आप लोग देख सकते हैं डिफरेंसेस, ठीक है। ब्राउजर इंजन is software application for the access the information on WWE and allow the access and display the website locally installed on the user's device like the Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari are the example of the browser engine, ठीक है। and search engine का definition है a software system that is designed to search for the information on WWE, ठीक है। allow the searching and filtering the website and a software system of run on www, ठीक है। for example Google, Bing, Yahoo, ask.com are the some example of search engine, ठीक है। यहाँ पर कौन सी वेब ब्राउजर कब आया है इसका जो ईयर है वो देख सकते हैं, ठीक है। गूगल मोसिक आया है, ठीक है, 1993 पर जनवरी। गूगल क्रोम 2008, मोजिला फायरफॉक्स 2002, सफारी 2003, इंटरनेट एक्सप्लोरर 1995, माइक्रोसॉफ्ट एज 2015, ओपेरा 1995, स्लिम ब्राउजर 2021, ओपेरा 1995, स्लिम ब्राउजर आप लोग देख सकते हैं। मैक्सन चाइना 2002, यूसी ब्राउजर 2017, टोर 2002, नेटस्केप 1994, ठीक है। ये डिटेल्स भी देख सकते हैं, गूगल, बिंग, याहू, ये सब सर्च इंजन है, ठीक है। सर्च इंजन देख लेते हैं इसका कौन सी ईयर में कौन सी सर्च इंजन आया है, ठीक है। आर्ची 1990, गूगल 1998, बिंग 2009, याहू 1994, yandex 2000, baidu 2000, ask 1996, duckduckgo 2008, aol.com 1985, netscape 1994, ठीक है। क्रोएलर बेस्ड यहाँ पर देख सकते हैं एंड डायरेक्टरी बेस्ड। थ्री टाइप्स ऑफ देयर आर द 5 टाइप्स ऑफ द सर्च इंजन आर देयर, ठीक है। क्रोएलर बेस्ड, डायरेक्टरी बेस्ड, हाइब्रिड, मेटा एंड स्पेशलिटी, ठीक है। इसके एग्जांपल देख सकते हैं एंड डेफिनेशन भी। लिस्ट ऑफ द मेटा सर्च इंजन, इनक्विक, डॉगफिल एटसेट्रा। Metacrawler, MetaEgar, and Mama, etc. Guruji.com 2006, 123, Khoj.com 2014, Epic Search Engine and Browser 2010, JustDial.com 1996, VSS, Rediff 1996, ठीक है। इस तरह की देख सकते हैं आप लोग। 13 Tab 2016, iBharat.org 2014, niva.go 2018, ठीक है। इस तरह की वीडियो पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग एंड शेयर माय वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।